बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शुक्रिया, आपने यहाँ तशरीफ़ लाया। एक इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करनी है। तो पहले मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। पहले हमारे बीच में जो है एडवोकेट शाहीन साहब, ये बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रहे 27 साल। ये हमारे पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ नज़ीर अहमद खान साहब है, चेयरमैन है इस वक्त भी डिस्ट्रिक्ट बडगाम के। हमारे साथ इश्तियाक कादरी साहब हैं, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे पार्टी के बानी मेंबरों में से हैं, एंड द पर्सन हु रिजुविनेटेड दिस मूवमेंट, ये जो पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए। तो बाकी सारे हज़रात यहाँ पर हैं। खुर्शीद साहब है, ये हमारी पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन हैं, MLA है लंगेर से। एजाज खान साहब हैं, ये हमारे रिस्ट्रक्चरिंग के नए जो एक्सपेंशन हुआ है उसमें यूथ के प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ यहाँ के मायानाज ब्यूरोक्रेट जिन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, जनाब गजनफर साहब है। और हमारे साथ एक और सीनियर ऑफिसर, सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे जिन्होंने तिलहगाम से इलेक्शन लड़ा है, जनाब नज़ीर साहब। परवेज़ साहब हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है। हमारे साथ इनके साथ परवेज़ साहब बैठे हैं, ये ट्रेजरर है। हमारे साथ फिरदौस साहब है, पार्टी के तर्जुमान और फाउंडर मेंबर में से हैं। और हमारे साथ खुर्शीद अहमद डार साहब है, ये DDC है लंगेट से, मावर लंगेट से। तो आज की शुरुआत जो होगी वो वाइस प्रेसिडेंट की एक अपील होगी टू ऑल पार्लियामेंटेरियंस इन द कंट्री। जितने भी हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर हैं, तो उनके लिए अपील होगी। 2 लैंग्वेज में होंगे, क्योंकि बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन शायद हिंदी से कंपेटेबल ना हो। तो पहले इंग्लिश में ये अपील पढ़ेंगे, बाद में उर्दू या हिंदी में ये बयान करेंगे। जनाब शाहीन साहब। A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. I welcome you all to this press conference. I am selected by my all senior party colleagues and district presidents, and specifically we have Parliamentary Affairs Committee Chairman Mr. Sheikh Khurshid Saab. We have Political Affairs Committee Chairman Mr. Ishtiaq Kadri Saab. We have Provincial President Mr. Parvez Saab, Prince Parvez, and we have Legal Affairs Joint Secretary Mr. Javed Hubi Saab. Today we have called you on an urgent basis. We had a meeting, we concluded with certain conclusions with regard to the honorable and early release of detained Member of Parliament from Baramulla, Mr. Engineer Rashid, who is President of the All Awami Ittihad Party. As you know, we are appealing to all parliamentarians of India, irrespective of their party connections. We appeal them that every parliamentarian in India should rise above his partisan roles in favor of Engineer Rashid, because Engineer Rashid is a parliament member. He is the representative of the millions of people but he is detained in Tihar jail, and his budget session is starting from 25th November 2024. And the people of Jammu and Kashmir, the voiceless people of the Jammu and Kashmir, they need a representation in the parliament. Therefore we urge government of India to release the party head Mr. Engineer Rashid and enable him to participate in the parliamentary proceedings. We urge all parliamentarians to rise above political affiliations and stand for democratic principles by raising your voice for Engineer Rashid's release and his right to attend parliament. Denying him this opportunity is not just a betrayal of his mandate, but an insult to the democratic process itself. It sets a dangerous precedent where the will of the people is suppressed and their chosen representatives are silenced. में जिस तरह लोगों की खदमत की वो सबके सामने आया है। हम आज इस मौका पर तमाम भारत के पार्लियामेंटेरियंस से ये अपील करते हैं कि वो जमहूरी कदरों की बका के लिए, जमहूरी कदरों की पासदारी के लिए इंजीनियर रशीद की रिहाई के हक़ में अपनी आवाज़ बिला खौफ ख़तर बग़ैर तंजीमी तासुब पेश करें।
بلنٹ. اور اگر یہ اپرچونٹی جو ہم مانگتے ہیں کہ انجینئر رشید صاحب کو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا موقع ملنا چاہیے, وہاں بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے, اگر یہ حق اس کو نہیں دیا گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمہوریت سے وعدہ خلافی ہے اور یہ جمہوریت سے ایک مذاق ہے. یہ خطرناک ٹرینڈ ہے. اگر یہ ٹرینڈ برقرار رہی تو یہ ہندوستان کے 545 سے زائد پارلیمنٹیرینز کے لیے بھی ایک سگنل ہے. آج ہم جو کچھ آج انجینئر رشید صاحب کے پاس ہو رہا ہے, پیش آتا ہے, وہ کسی کے پارلیمنٹیرین کے ساتھ بھی کال پیش آ سکتا ہے. لہذا کر کے ہم جو استدعا کرتے ہیں کہ انجینئر رشید صاحب کے لیے تمام ہندوستان میں بیٹھے پارلیمنٹ ممبروں کو رشید انجینئر صاحب کی رہائی کے لیے اور اس کی آواز پارلیمنٹ کے ایوانوں میں گونجنے کے لیے اپنی آواز بلند کرنی چاہیے, تاکہ وہ اپنے لوگوں کی, اپنے ووٹروں کی وہاں ریپرزنٹیشن کریں. اگر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اس جو میٹنگ کے حوالے سے بھی کہ وی آر ناٹ سائلنٹ اسپیکٹیٹرز, نیدر دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر آر سائلنٹ اسپیکٹیٹرز on the detention of engineer Rashid. On one side we have taken legal measures which are ipso facto, وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن انجینئر صاحب کی رہائی جو گرفتاری ہے اس کے سیاسی مضمرات ہیں. Therefore we have to take all political and diplomatic measures for honorable and safe release of engineer Rashid, and all democratic voices must rise. اور اس سلسلے میں ہم نے جو اقدامات کرے ان کا ہم بعد میں بھی آپ کو اشارہ دیں گے. وی ول ہیو اے پبلک کمپین فار ریلیز آف انجینئر رشید اینڈ ادر ڈیٹینیوز آلسو, بٹ ود ان دا پیرامیٹرس آف لا, ود ان دا پیرامیٹرس آف دا کانسٹیٹیوشن, بیکاز right to expression, right to propagate an ideology is a fundamental right under Constitution of India, which we respect, that we can espouse the cause of engineer Rashid and his safe and honorable release. For this political momentum is must, and this august body which is behind you, we have taken certain decisions which will communicate with the public through you at appropriate time, and this time this appeal is to be circulated, and we will hold on. We are fighting a legal battle in courts. There is no doubt about it. We have engaged a very prestigious and very competent legal team, spearheaded by senior lawyers at Delhi and coordinated by the lawyers at Srinagar. So we are in close connection with the legal team at Delhi, our legal team which is headed by Mr. Javed Hubi, and we will take all legal measures. But at this time, since the matter is politically very important, therefore this press conference, therefore this appeal to entire Indian parliamentarians, Indian conscious voters, that they must rise to the occasion and call for the release of Mr. Engineer Rashid.